into mu plus tan theta 1 minus mu tan theta. This is the maximum speed a vehicle can have in order to turn easily through a banked road, through a curved road. और curved road से आप easily turn कर सकते हैं. This is the maximum speed a vehicle can have to cross this to turn on this curved path. So this is V maximum. और हमने वहां देखा on level road is equal to under root mu rg. V is equal to under root mu rg हमने level road में देखा, और यहाँ V maximum is equal to gr into mu plus tan theta 1 minus mu tan theta. और हमने वहां कंडीशन देखी, if mu is 0, फ्रिक्शन फोर्स इज 0, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0. बट अबाउट हियर, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अगर बैंकिंग ऑफ रोड्स में आपका एंगल फ्रिक्शन 0 होगा तब क्या कंडीशन होगी. सो इफ वी सपोज if mu is equal to 0, what will happen? V maximum will be equal to V under root of G into R, mu 0, tan theta बचेगा यहाँ पे, डिवाइड बाई 1 माइनस mu 0, ये सारा 0 बनेगा, डिवाइड बाई 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. You get mu R G, you get mu G R, mu becomes 0, you receive tan theta only, mu becomes 0, this portion will be 0, there is 1 in the denominator, anything divided by 1 will not affect the whole equation. gr tan theta, तो this under root of gr tan theta, यानी कि बैंकड रोड पे अगर फ्रिक्शन 0 भी होगी, even then vehicle will turn, और आपका wear and tear बहुत कम होगा. With this speed the vehicle can turn easily on the banked road if the friction is 0. But in case of level road, you have necessary friction to compensate the centripetal force. But in case of banking of roads, you cannot have necessary friction. If friction is insufficient, even then the vehicle can easily turn the curved road. This is called optimum speed. It's called optimum tan theta. ये optimum, इसको optimum speed भी बोलते हैं. और यहाँ पे V 0 बनेगा if friction is 0. If here friction is 0, V cannot be 0. Even then, easily this vehicle can turn the curved path. This was the angle of banking and bank of roads. Hope you will understand it. सबसे बड़ी बात जो है, that is keeping in view the diagram. डायग्राम को समझने की कोशिश करें. जब आप डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, आप कैसे बैलेंस हो रहे हैं फोर्सेस, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सिस पे हम कैसे वेक्टर को रिजॉल्व